welcome back. In this video we are going to solve illustration number 20, which is based on binomial probability distribution. Illustration number 20, let's start. A social worker claims that 10% of the young children in a city have vision problem. A sample survey agency takes a random sample of 10 young children from the city to test the claim. If at the most one young child is affected by the vision problem, the claim of the social worker is rejected. Find first the probability that the claim of the social worker is rejected, and the second we have to find the expected number of young children having vision problem in the randomly selected 10 young children. First of all, here a social worker claims that 10% of a young children in a city have vision problem. So P is equals to 10% is equals to 10 divided by 100. P is equals to 0.10, which is the percentage of young children in a city have vision problem. P is 0.10. So Q is equals to 1 minus P. 1 minus 0.10 is equals to 0.90. This is the value of Q. And N is equals to 10 young children randomly selected. So N is equals to 10. So first is the probability that the claim of the social worker is rejected. अब जो claim है वो कब reject होगा? When a sample survey agency takes a random sample 10 young children from the city to test the claim. If at the most one young child is affected, यानी कि 0 or 1 child is affected by vision problem, a claim of social worker is rejected. So probability P0 plus P1. एक बार x की जगह पे हमें लेना है 0 plus x की जगह पे हमें लेना है 1. So probability of this we will find P0 plus P1. हमें ये फाइंड करना है at the most 1, 0 or 1. Then the claim of social worker will be rejected. So Px is equals to NCx Px power Qn minus x power. एक बार x की जगह पे 0, P0 plus P1 एक बार x की जगह पे 1. So 10 C0, 0.10, 0 power, 0.90, 10 minus 0 power plus 10 C1, 0.10, 1 power, 0.90, 10 minus 1 power is equals to 10 C0, 1, 0.10, 0 power, 1 and 0.90, 10 minus 0 is equals to 10 power plus 10 C1 is equals to 10, 0.10 1 power is equals to 0.10 and 0.90 10 minus 1 power is equals to 9 power. Now 0.90 की आप 10 पावर करोगे so you will get 0.3487 plus 10 into 0.10 into 0.90 की 9 पावर होगी 0.3874. Now you have to multiply 10 into 0.10 into 0.3874, then you will get 0.3874. 0.3487 plus 0.3874 is equals to 0.7361. This is the required probability. Now sample survey agency rejects the claim of the social worker if at the most one young child has eye problem. Probability of rejecting the claim of social worker by the sample survey agency is 0.7361. Okay. Now the second thing we have to find out is the expected number of young children having eye problem in the randomly selected 10 young child. यानी कि सिग्मा x हमें फाइंड करना है. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ x इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू np and multiplied by p is equals to expected number of young child which have eye problem.
So sigma x is equals to NP. N is 10 and P is 0.10. So 1 is the required answer. So this is illustration number 20. Now illustration number 21. An experiment is conducted to toss 5 balanced coins simultaneously. If we consider occurrence of head on the coin is a success, obtain the probability distribution of number of successes. If such an experiment is repeated 3200 times, then obtain expected frequency distribution of the random of successes. यहाँ पे जैसे हमने एक ही expected value फाइंड की, यहाँ पे सारे जितने भी सक्सेस हो रही है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सारे की expected frequency फाइंड करनी है. For this distribution, obtain expected value of the number of success and also obtain its standard deviation. First of all, P यानी कि probability of success is 1/2. P is 1/2, so Q is 1 minus 1/2, so P n is equals to 5 क्योंकि 5 balanced coin जो है वो simultaneously toss किया जा रहा है. So n is equals to 5, P is equals to 1/2. Q is equals to also 1/2. अब probability distribution का formula NCX into P x power Q n minus x power. N is 5, C x as it is 1/2 x power 1/2 5 minus x power. First of all, we have to find out the probability distribution. So x की जगह पे जितनी भी वैल्यूज पुट अप करनी है वो हम बाद में करेंगे ताकि एक टेबल के फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकें. 5cx 1/2 x पावर 1/2 5 माइनस x पावर. नाउ जब भी डिनोमिनेटर इक्वल होता है कोई भी वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस होता है अगर उसकी पावर में, तो पावर जो है उसका एडिशन होता है और मैथ्स के रूल के हिसाब से पावर का क्या होगा प्लस इफ द वैल्यू इज सेम. So 5cx as it is 1/2 x plus 5 minus x plus 5 minus x, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम है इसलिए पावर का क्या होगा एडिशन. सो 5cx x कैंसिल हो जाएगा. अब 1/2 की 5 पावर 1/2 की 5 पावर होगी 1/32. सो 5cx डिवाइडेड बाय 32. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. अब हमें करना है, हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है वेयर x वैल्यू इज 0 1 2 3 4 एंड 5. यानी कि यहाँ पे 0 सक्सेस मिले, यानी कि अगर कोई भी कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें हेड्स नहीं मिलेगा. एक बार हेड्स आएगा, 2 बार हेड्स आएगा, 3 बार हेड्स आएगा, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. इस तरह से 6 अलग अलग जो है उसकी जो फेवरेबल आउटकम्स जो है हमें मिलेगी. अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी Px इज इक्वल्स टू 5cx अपॉन 32. यहाँ पे x की जगह पे 0 1 2 3 4 एंड 5 पुट अप करना है. यहाँ पे अगर 5cx अपॉन 32 में x की जगह पे 0 लिखते हैं तो 5c0 डिवाइडेड बाय 32. 5c0 इज 1 अपॉन 32. x की जगह पे 1 5c1 अपॉन 32. तो 5 अपॉन 32. 5c2 upon 32. 5c2 is equals to 10. 5 into 4 divided by 2. So 10 divided by 32. X की जगह पे 3. 5c3 divided by 32. 5c3 is equals to 10 by 32. 4. 5c4 upon 32. 5 divided by 32. 5. 5c5 upon 32. 1 by 32. Now यहाँ पे हमें बोला गया है if such an experiment is repeated 3200 times then obtain expected frequency. अब हमें चाहिए expected frequency यानी कि n into px. Here n is 3200. 3200 को हमें probability के साथ multiply करना है. That's why we can find expected frequency 1 by 32 into 3200. 3200 into 5 by 32 500.
3200 into 10 by 32 1000, 3200 into 10 by 32 again 1000, 3200 into 5 by 32 500, and 3200 into 1 by 32 100. This is the expected frequencies for probability distribution. Then you have to find out expected value is equals to NP. N है 5 and P है 1 by 2. So you will get 2.5 as expected value of number of successes. उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ, तीनों का मल्टीप्लिकेशन और बाद में जो आंसर है उसका निकालना है रूट. सो दिस इज योर होमवर्क. 2 पॉइंट आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल हमने आज सोल्व किए. नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इलस्ट्रेशन 22 हम सोल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस